on examination. Students were telling, पिलाने कहूतले sir on examination start करंतु. So as per your request, on examination रो class आज start करिया पिले. So on examination कहले कौन? What do you mean by on examination? On examination कहले परीक्षा संबंधरे बा परीक्षा उपरे. Yes or no? परीक्षा संबंधरे परीक्षा उपरे. So let us see what is there in the introduction of author section. The author is Winston Churchill. Okay? Winston Churchill. लिखिए पिले. Every word must be noted down because MCQ is there. नहीं. So what happens? Sir Winston Leonardo Spencer Churchill. The full name of Winston Churchill is Sir Winston Leonardo Spencer Churchill. This is the full name of Winston Spencer Churchill. Was born in the year 1874. केबे 1874 रे तांकर जन्म होइतला. केबे 1874. And he died in the year 1965. 1965. लिप्सा +2 फर्स्ट ईयर क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करिबा मा. डोंट वरी. अल्टरनेटिव इंग्लिश और +2 फर्स्ट ईयर क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट हबो. डोंट वरी. सो 1965 रे तांकर मृत्यु होइतला. 1965 1965 मसिया. 1874 रे तांकर जन्म. 1965 मसिया रे से माने एक्सपायर करते डेथ होता तांकर. And he was the Prime Minister of England twice. He was the Prime Minister of England twice. दुई थर पाई से इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री हिथिले. के? विंस्टन स्पेंसर चर्चिल. के थर पाई हिथिले? दुई थर पाई. कौन हिथिले? प्रधानमंत्री. So the year was 1940 to 1945. First term 1940 रु 1945. फर्स्ट टर्म होची 1940 रु 1945. 1940 to 40 to 45 फर्स्ट टर्म. एंड द सेकेंड टर्म थिला तांकर 1951 to 55. 1951 रु 55 होची तांकर सेकेंड टर्म. 1951 रु 55. तो प्रथम जिनस है 1940 रु 45 से प्रधानमंत्री थिले. तापर 1951 रु 55 भी से प्रधानमंत्री थिले. के? Winston Churchill. A noted statesman. He was a noted statesman. Statesman कहले कौन पिले? स्टेट कहले राज्य आम समय जानथिबा. तो एटी स्टेट्समैन कहले जने माने विख्यात राजनीतिज्ञ, निज देश को भल पाउथवा व्यक्तित्व. हैं? स्टेट्समैन एंड ओरेटर. ओरेटर कहले बाग्मी, जने वक्ता, विख्यात वक्ता भी थिले. के? विंस्टन Churchill. Churchill was also an officer in the British Army. He was alternative English, history, political science, and compulsory English and MIL. These are the classes that to be taken by Master of English. +2 first year, +2 second year, and +3. So orator. Churchill was also an officer in the British Army. He was also an orator in the British Army. British Army रो भी जने कौन थिले से? ऑफिसर थिले. के? विंस्टन चर्चिल. Was also an officer in the British Army. A historian, जने ऐतिहासिक, इतिहास को भल पाउथिबा व्यक्तित्व, जने ऐतिहासिक थिले. A writer, जने लेखक मध्य थिले. He was also a writer. Then and an artist. जने कलाकार और चित्रकार तम कहिबार. An artist. He was awarded the Nobel Prize in Literature in the year 1953. 1953 मसिया रे तांको नोबेल प्राइज मिलिथिला. को मसिया रे? 1953. 1953 मसिया रे तांको नोबेल प्राइज मिलिथिला. कोन पई? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. He was awarded Nobel Prize for Literature. 1953 मसिया रे. 1953 रे. So a tharo is an excerpt. EXCERPT. excerpt कहले उद्धृतांश जोटा गोटे जिनस रो आछि. excerpt. EXCERPT
CERPT लिखा एक्सर्प कहले उद्धृतांश ए ठारो इज एन एक्सर्प फ्रॉम चैप्टर 2 2 नंबर चैप्टर of Winston Churchill's autobiography a roving commission my early life तो तांकर जो ऑटोबायोग्राफी थिला ऑटोबायोग्राफी कहले कोन बिले आत्मजीवनी बायोग्राफी कहले जीवनी मन रखिबा ऑटोबायोग्राफी कहले when a person write about his life himself that is autobiography से जेतबेले निजे निज जीवन विषय लेखे सेटा हो ऑटोबायोग्राफी आ बायोग्राफी कहले जनकर जीवन विषय रे अन्य जन जेतबेले लेखे ताको हमें कहबा बायोग्राफी सेटा हो जीवनी आ ऑटोबायोग्राफी कहला आत्मजीवनी तो तांकर जो आत्मजीवनी थिला विंस्टन चर्चिल से आत्मजीवन ना थिला ए रॉबिंग कमिशन माई अर्ली लाइफ एटा को मसिया पब्लिश होता 1930 मसिया ए रॉबिंग कमिशन माई अर्ली लाइफ सो इट वाज रिटन इन द ईयर 1930 1930 मसिया पब्लिश होता कोटा ए रॉबिंग कमिशन माई अर्ली लाइफ गेटिंग मी तो ये जो पाठ में पढ़ा ऑन एग्जामिनेशन इट इज डेराइव फ्रॉम चैप्टर 2 ऑफ हेरो से जो ए रॉबिंग कमिशन माई अर्ली लाइफ ऑटोबायोग्राफी गोटे चैप्टर थिला जार ना थिला हेरो ता सेटा 2 नंबर चैप्टर रु ए पाठटा आसी माने ऑन एग्जामिनेशन ऊपर विंस्टन चर्चिल करा व्यू से थ्रू आसी तो एटा थिला दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर इंट्रोडक्शन तो पिले कही on examination for many are not a pleasant experience not at all nobody likes examination yes or no nobody likes examination nobody likes to sit inside examination hall nobody wants to write examination everybody wants certificate समस्त सर्टिफिकेट चाहती कि परीक्षा देवा पे चाहते समस्त चाकरी चाहती कि इंटरव्यू देवा पे चाहते दिस इज द ट्रू रियलिटी yes or no so examination for many are not a pleasant experience आनंददायक एक्सपीरियंस नुह अभिज्ञता नुह the apprehension कहले कोन बिले fear डर apprehension कहले fear डर the apprehension of not doing well makes even bright student anxious the apprehension of not doing well भलो न करिवार डर माने परीक्षा रे भलो न करिवार डर well you know makes even brighter student anxious even if जो माने भलो पिला से माने भी उत्कंठारे रहंती मोर परीक्षा कोन हबो कोन नाही मतलब लिखिची मार्क देबे ना नाही मतलब लिखिची मार्क देबे तो एई भलिया they are also anxious everybody whoever it may be whoever is writing exam they are anxious whoever it may be ISI aspirants OPS aspirants or UPSC aspirants whoever it may be everybody is anxious while writing examination while we are considering about examination so वर्तमान में पाठ पढ़ा ऑथर व्यू कौन थिला विंस्टन चर्चिल व्यू कौन थिला एग्जामिनेशन उपरे से विषय में जानिबा ओके सो आई हैड स्कार्सली पास्ट माय 12th बर्थडे I had scarcely passed my 12th birthday. Scarcely, hardly, just you can say. I just passed my 12th birthday. 12th birthday मोर सरी छि माने मो 13 वर्ष मते 13 वर्ष रे मो पदार्पण करछि जस्ट when जेतेबेले when I entered मो प्रवेश कली कोठी की the inhospitable regions of examination. Inhospitable कहले unfavorable, unpleasant, अप्रिय. Getting me? So inhospitable regions कहले अंचल एथि regions बोली काहा को कहै छि एग्जामिनेशन परीक्षा को कहै छि बोले of examination से एग्जामिनेशन परीक्षा नामक एक अप्रिय अप्रीतिकर अंचल भीतर को मते ठेली दिया गला. I was being pushed. केते वर्ष होउछि मते just past my 12th birthday. I just entered my 30. 13 वर्ष रे जस्ट पदार्पण करिछि आ मते सेई जो माने कष्टदायक अंचल परीक्षा नामक अंचल को मते ठेली दिया गला. I was being pushed there. Through which जहा मध्य देई कि through which for the next 7 years परवर्ती 7 वर्ष for the next 7 years I was destined to journey and I had no other options. मो पाखरे कोनोसी ऑप्शन ही नथिला मते नेक्स्ट 7 वर्ष पई
सेई अंचल मध्य देकी सेई परीक्षा नामक अंचल मध्य देकी जीवार ही थिला एट एनी कंडीशन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू जर्नी these examinations were a great trial to me and these examinations were a great trial call test trial call punishment so trial call test trial call punishment whatever you can tell whatever you can take whatever you can consider so what happens these examination ei parikha gudiko jo parikha gudiko mu daba pai jautule were a great trial call punishment mo pai gote danda thila punishment it was just like punishment to me ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ନ ରହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ୱେର୍ ଦେୟାର ଇନସାଇଡ୍ ମି and the subject ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ the subjects which were dearest to the examiner ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ परीक्षक मानू भल लगुला दोज सब्जेक्ट दैट वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर जो माने परीक्षा करूले से माने जो विषय गुड़िक भल पाऊले से जो विषय गुड़िक भल लगुला हैं ऑलमोस्ट इनवायरेबली INVARIABLY इनवायरेबली कहले ऑलवेज ऑलमोस्ट कहले प्राय सब अधिकांश समय इनवायरेबली दोज I fancied least. Fancied कहले like. Fancied कहले like. I like least. Least कौन बोले? This is the superlative degree of little. Little superlative degree होची least. Little, less, least. माने मते बिल्कुल भल लागो मते. I was not at all interested. टिकिए भी पसंद नथिला. जहाँ सब whatever were being taught there and whatever being the favorite subject of the examiner परीक्षक मानकर जो प्रिय सब्जेक्ट थिला विषय वस्तु थिला सेही विषय वस्तु गुड़िक मते टोटाली पसंद नथिला ताले कौन हम पिले सो आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड मु चाहूଥିଲି मते परीक्षा करानु आई वुड हैव लाइक टू बी एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसेज मोर इच्छा कौन थिला मते परीक्षा करा जाऊ को सब्जेक्ट रे हिस्ट्री इतिहास आई लाइक इट आई लव इट पोएट्री यस कविता मते भल लगे सो हिस्ट्री पोएट्री देन राइटिंग एसे राइटिंग आई लाइक इट एग्जैक्टली सो ए तीनटा सब्जेक्ट दीज आर द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ विंस्टन चर्चिल कौन कौन थिला बेले हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसेज these three are the favorite subject of Winston Churchill. Now my question is, what are the favorite subject of examiner? Examiner मानकर favorite subject कौन थिला वर्तमान आमे दिबा से भितर को. So the examiners on the other hand were partial to Latin and mathematics. So the favorite subject of examiner or they are partial करे पक्षपातिता करिबा से जिंस को अधिक गुरुत्व दवा से जिनस को अधिक भल पाइबा पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स तो से माने कोटा भल पाउथिले को जिनस ऊपर परीक्षा करूथिले सेटा थिला लैटिन एंड मैथमेटिक्स यांकु कोन भल लागुथिला आपिले इतिहास माने हिस्ट्री कविता पोएट्री प्रबंध लिखर एसे राइटिंग एई तीनटा दीज आर द थ्री फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ विंस्टन चर्चिल कौन हिस्ट्री पोएट्री राइटिंग एसे नाउ माय क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनर्स एग्जामिनर मान का फेवरेट सब्जेक्ट कौन थिला यस लैटिन एंड मैथमेटिक्स सो व्हाट इज द व्यू ऑफ विंस्टन चर्चिल ऑन एग्जामिनेशन कौन व्यू थिला तांकर इट वाज अ ग्रेट ट्रायल फॉर हिम तांकु लागुथला एटा दंड व्हाट इज हिज व्यू इट वाज इनहॉस्पिटल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन व्हाट ही हैज टोल्ड इनहॉस्पिटल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन कागु कहिसंती परीक्षा को कहिसंती So Latin and mathematics and their will prevailed. Their will कहले इच्छा WILL will कहले इच्छा. Their कहले एठी why the word there is used there. Their कहाँ पे use है ची परीक्षक मान को भाई examiners मान को भाई. So their will prevail means the examiners will prevail. तो शेषरे कहार जय है ची कहार इच्छा माने बलवत्तर रहिला examiner मान कर जेतले गोटे पिला गोटे स्टूडेंट आउ टीचर भितर कंपटीशन हम ओबियसली किए जीतबार पिला निश्चित भाव टीचर ही जीतबे इट्स वेरी क्लियर
सो दे आर विल प्रिभेल शेष में सेमानकर जय होती मत हिस्ट्री पोएट्री राइटिंग एसे किसी प्रश्न पचारि ना आउ कौन शेष में मत परीक्षा दवाई पड़ी कौन लाटिन एंड मैथमेटिक्स रे मोर ओवर मोटा मोटी भाव मोर ओवर the question which they asked on both this subject were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer से जहाँ अरे तुम परीक्षा करैल ठीक अच्छे मु जो सब्जेक्ट कहली तो तुम परीक्षा करैल ना टिके सहज प्रश्न देथिले भल होई न टिके सहज प्रश्न देई न था ना जहाँ भी प्रश्न मते दिया हैला से प्रश्नर अ भी मते जणा नथिला मु प्रश्नर उत्तर देई ही पारिली नहीं ठीक सहजिया प्रश्न देते मुझे लिखी था मत भल लगुन से सब्जेक्ट गुड़ाक से मैंने कौन कले सब डिफिकल्ट क्वेश्चन सब डिफिकल्ट माने जहाँ डिफिकल्ट कले डिफिकल्ट मोर तो मुंड पर बाउंस कर पड़ेगा से टाइप थिंग वाज हैपनिंग सो मोर ओवर द क्वेश्चंस व्हिच दे आस्क्ड ऑन बोथ दिस सब्जेक्ट जो प्रश्न गुड़िक ये जो लैटिन और मैथमेटिक्स रे जो सार माने पचारिले जो क्वेश्चन गुड़ा आसिला परीक्षा हैं वेर ऑलमोस्टली इनवायरेबली दोज ऑलवेज सब बेले खाली मु गोटे थर कथा कहूनी सब बेले जो प्रकार प्रश्न से माने परीक्षा रे पचारुथिले इनवायरेबली टू व्हिच जो गुड़िक टू व्हिच आई वाज अनेबल टू सजेस्ट ए सैटिस्फैक्टरी आंसर I was unable to suggest मु कौनसी प्रश्नर उत्तर ठीक भाव दबाटा अलग कथा सैटिस्फैक्टरी आंसर दे पारिली ना सैटिस्फैक्टरी आंसर बिल्कुल देविनी जहाँ फल एग्जामिनर सैटिस्फाइड हम मत मार्क दबा ये कौन प्रश्नर उत्तर मु दे पारिली नहीं कहीं दे सो हियर द क्वेश्चन अराइज पिले ए वर्ष बोर्ड परीक्षा प्रश्न आसला why did चर्चिल नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन परीक्षा रे चर्चिल भल कले नहीं कहीं Churchill, Winston Churchill actually likes history, poetry and writing essays. On the other hand, the examination liked Latin and mathematics. And moreover, whatever the situation may be, whatever questions were there, the questions, were from the ignorant region of Winston Churchill, ignorance region of Winston Churchill. That's why he didn't do well in the examination. So both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. I should have liked to be asked to say what I knew. I should have liked to be asked to say what I knew. मु चाहूथिले I should have liked to be asked मते पचरा जाओ ask me कौन पचरा जाओ what I knew मु जो जिनस जानी ची मते से भितर प्रश्न करो मु 1 2 100 पर्यंत जानते मते पचरनो मुझे कदी सब जानी मत पचार मुझे एबीसीडी जेड पर्यटन जानी मत पचार हाँ मत बनाना मुह कौन तुम जुक्ताक्षर पचार मुझे जानी छोट पिला यही भाया कथा थी बोले व्हाट आई न्यू दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो एंड व्हाट दे वर डूइंग आई शुड हैव टू बी लाइक टू आस्क व्हाट आई डिडंट नो बट एक्जाक्टली व्हाट दे वर डूइंग से माने कौन करथुले दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो से माने सब कौन पचारुले मु जहाँ जानी नी से ही प्रश्न गुड़िक से पचारुले व्हाट आई डिड नॉट नो सो व्हाट व्हेन आई वुड हैव willingly displayed my knowledge when I would have willingly displayed my knowledge willingly कहले निज इच्छा रे डिस्प्ले कहले प्रदर्शन करवा नॉलेज कहले ज्ञान मु मो निज इच्छा रे मु जानी थिबा ज्ञान को प्रदर्शन करबा पई चाहूथिली दे साउट टू एक्सपोज माय इग्नोरेंस से माने मते मूर्ख बोली प्रमाण करबा पई चाहूथिले मोर इग्नोरेंस को एक्सपोज करूथिले दे माने इग्नोरेंस कहले द अननोन पार्ट they were trying to expose my ignorance nobody was in the mindset that they will help me nobody was helping me at all expose my ignorance and this sort of treatment ये जो treatment हला मो सहित ये भलिया जो परिस्थिति हला कौन हला this sort of treatment had only one result तार फल कौन हला पिले वो had only one result I did not do well in examination
मु परीक्षा रे भल करी पारिली नाही आई डिडंट डू वेल इन एग्जामिनेशन केमती भल हबर पिले जदि जड़े लोक न केबे पढ़िनी से जिनस भल लगुनि से सब्जेक्ट भितर आसब प्रश्न से केमती भल कर तुम पढ़ीच कौन कैलकुलस आसिली इक्वेशन रु प्रश्न केमती कर तुम इंग्लीश पढ़ के जाइछ परीक्षा होची आईटी परीक्षा केमती कर तुम हिस्ट्री पढ़ के जाइछ पॉलिटिकल क्वेश्चन है केमती कर तुम सो सच टाइप ऑफ सिचुएशन यही भाया गोटे सिचुएशन थिला जहाँ फल किए विंस्टन चर्चिल परीक्षा रे भल कले नहीं भल करी पारिले नहीं आ गोटे पैराग्राफ पढ़िबा बिले एक्जाक्टली 8टा बेले क्लास सारिबा so this was especially true to my entrance examination to Haro this was especially true to my entrance examination to Haro तो यही कथाटा घटी केबे जते बेले से हारो स्कूल रे पढ़िबा पई जाउतले तांकर जो एंट्रांस एग्जामिनेशन होउतला हारो स्कूल से प्रथमे इटन स्कूल रे पढ़िथिले इटन स्कूल रो हारो स्कूल को आइथिले स्टैंडर्ड 4 रे तांकर एडमिशन करिबा पई तो सेठी जते बेले एंट्रांस हैला सेही एंट्रांस समर कथा है द हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन वो द हेडमास्टर ऑफ हारो स्कूल रो हेडमास्टर को नाम कोन थिला डॉक्टर वेल्डन कोन ना थिला डॉक्टर वेल्डन WELDON डॉक्टर वेल्डन Dr. Weldon, however, so Jabiu took a broad-minded view of my Latin prose. Mu Latin prose रे जहाँ आंसर लिखी थी whatever I have written, took a broad-minded view. माने से पाठक को देखी कि किसी चिंता करे नहीं. से broad-minded view प्रशस्त मनोभाव नहीं कि मोर पाठक को देखिले मु जहाँ भी लिखी whatever I have written जहाँ लिखी थी मु ताको से माने संकीर्ण मनोभाव रे देखिले नहीं प्रशस्त मनोभाव नहीं कि देखिले Latin prose. He showed discernment in judging my general ability. Discernment, DISCERNMENT. Discernment. कहले judgment पहले. Discernment, DISCERNMENT. Discernment कहले judgment. He showed discernment in judging my general ability. मोर साधारण दक्षता को देखिकी से मते जज करे. माने साधारण मते देखिकी मोर ओरल स्किल देखिकी से मते जज करे. किए Dr. Weldon, the headmaster. Okay, this was the more remarkable. Remarkable कहले पिले कौन? Yes, you can say. Remarkable कहले माने मने रखिवा योग्य. Important, महत्वपूर्ण. So this was the more remarkable because I was found unable to suggest a single question in the Latin paper. एटा माने महत्वपूर्ण. ए घटनाटा कहबा महत्वपूर्ण, important एथि पई जे कारण जेतबेले मोर लैटिन रो परीक्षा हला एंट्रेंस परीक्षा पाई सेतबेले कोन हला आई वाज अनएबल टू राइट ए सिंगल आंसर इन माय लैटिन पेपर मोर लैटिन रे जहा प्रश्न दिया हैतला गोटे सिंगल आंसर रो उत्तर मु देई पारिली आई वाज फाउंड अनएबल टू आंसर ए सिंगल क्वेश्चन इन द लैटिन पेपर सो व्हाट आई डिड देन आई रोट माय नेम एट द टॉप ऑफ द पेज इटा थिला मोर फुल स्केप पेपर I wrote my name on the top of the page. Then, what happens? I wrote my name on the top of the page. I wrote down the number of the question then what I did, I wrote name, then number of the question. I wrote the number of the question. Then, I wrote down the number of the question. After much reflection कहले कौन पिले thought, भाबिबा, बहुत समय भाबिला परे. After much reflection, I put a bracket around it. Thus, I put a bracket around it. बहुत भाबिला परे मु ब्रैकेट देई छी आउ किछि तो जानली नै ब्रैकेट दे मु भाबिले हम ब्रैकेट दवा दरकार अछि नहीं सो यस बट देयर आफ्टर ता परे किंतु ता परे बट देयर आफ्टर व्हाट हैपेंस I could not think of anything connected with it that was either relevant or true. I could not find anything connected to it either relevant or true. Relevant कहले संपर्कित, true कहले सत्य. तो सही प्रश्न संपर्कित कौनसी माने कनेक्टिंग जिनस भी पाइली नहीं कि यही भलिया किछि भी लिखि देबी ना आसिला नहीं कौनसी फैक्ट मो माइंड को आसिला नहीं कि कौन लिखिबी I was just unable to write. Incidentally घटनाक्रमे by the way what happens they are arrived from nowhere in particular blot and several smudges blot and smudge
लुह पड़ी सृष्टि होइथिबा दाग ब्लड एंड स्मच कहले कौन पिले BLOTSMUDGES ब्लड एंड स्मजेस कहले लुह पड़ी सृष्टि होइथिबा दाग सो इंसिडेंटली दे आर अराइव्ड फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर ब्लड एंड सेवरल स्मजेस मो मुह तल को करिकी पेपर को देखुची आ मो पेपर धीरे धीरे कला कला दाग हो गलानी मोर पेपर ओदा हो गलानी मु कांदुची मो आखिरु लुह पड़ी पेपर रे कला दाग सृष्टि हो जाइए देयर आर ब्लड्स एंड स्मजेस सो आई गेज फॉर 2 whole hours गेज GAZED गेज निरंतर वॉच कंस्टेंटली गेज कहले कौन पिले वॉच कंस्टेंटली आई गेज फॉर 2 whole hours एट दिस सैड स्पेक्टेकल से जंत्रणादायक दृश्य से लुह द्वारा सृष्टि होता दृश्य को दीर्घ 2 घंटा काल मु अनेकी रहिले चाहिकी रहिले सैड स्पेक्टेकल्स एंड देन एवं तापर एंड देन मर्सीफुल यूसेस मर्सीफुल कहले दयालु MERCIFUL मर्सीफुल कहले दयालु यूजर्स USHERS यूजर्स कहले अटेंडेंट्स इन्विजिलेटर भी कहि पाइबो तमे अटेंडेंट्स collected my piece of foolscape कहले जो A4 साइज पेपर एग्जाम कॉपी collected my piece of foolscape with all the others अलगा पिला मानकर सहित अलगा पिला मानकर कॉपी और मो कॉपी हां others and carried it up to the headmaster table मो कॉपीटा स्पेशली कहा पाको को गला हेडमास्टर को टेबल को गला रीजन कोन थिला why the user carried Winston Churchill's copy to the headmaster. The reason was what? Why? Because he had not written a single letter. But a single letter भी से लिखी नथिले. That's why it was being carried to whom? To the headmaster's table. It was from this slender indication. Slender कहले खिनो. It was from this slender indication. Indication कहले सूचना. From this slender indication, एठरू कौन सूचना से पाइले Mr. Weldon of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion कहले शेष निष्पत्ति तो से शेष निष्पत्ति नेले से फाइनल का कथा कहले Weldon drew the conclusion that I was worthy means yes able worthy to pass into hero. Dr. Weldon finally कहले जे पिलाटा पास ता पाखरे अछि एबिलिटी पिलाटा पास से कोन देखिले कोन नहीं हाउ ही जज इट डजंट मैटर Winston Churchill doesn't know exactly. It showed that एथुरु यह प्रमाणित हुए जे it showed SHOWD showed एथुरु देखा गला जे that he was a man capable of looking beneath the surface of the things. आउ एथुरु मु जानिबा को पाइली जे Dr. Weldon was a man who can look beneath the surface of the things. surface कहले गोटे आवरण कोनोसी जिंसर तळे थिवा जिंस को जणे लोक ऊपर देखिबा that is called beneath the surface of the things. A person who can see the things beneath the surface कोनोसी जिंसर तळे थिवा जिंस को जी देखि पारे surface of the things. A man is a man who is not dependent upon paper manifestation केवल कागज कलम रे लिखा हितबा ज्ञान ऊपर से विश्वास करू नथिले who doesn't believe in paper manifestation कहले yes internal thinking manifestations. I have always had the greatest regard for him and I have always had the greatest regard for him. तांका पई मो मन रे सब बेले सम्मान थिला थिबो एवं रहिछि मध्य मु तांको एबे भी माने तांको प्रति मोर सम्मान रहिछि पिले आज तो समय हो जाइछि बाकी तक जो रहिला पार्ट करिके हाफ एन आवर क्लास करिके सारीबा सो आसंता काली सेकेंड ईयर क्लास ठीक 7:30 रे स्टार्ट होछि पिले 7:30 रे फर्स्ट ईयर क्लास आमे 3टा बेले करिबा 3 PM रे करिबा तो सेकेंड ईयर क्लास चेंज होबो नाही 7:30 रे सो सांग मान को कहिबा जोड़िए कि रहिबे चैनल सहित एवरीडे रेगुलर क्लासेस आर देयर अपडेट्स आर टू द नॉर्मली अच्छी है सी यू टुमारो एट 7:30 बाय.